nice book. So, and the title of this chapter is Modeling in the Frequency Domain. Okay, I'm sorry, I actually missed one thing. I should start the record button. Okay, so I'm recording now for my own record. Okay, now let's go back to presenting. Can you screen the now again lecture slides आपको नजर आ रही हैं? Yes, sir. Okay. So this is second chapter of nice book, and it's called Modeling in the Frequency. The title of the chapter. G. Sorry. Okay. Is there a problem? Okay. No, sir. Okay. So it's the second chapter, and the title of the chapter is Modeling in the Frequency Domain. And it's actually, this chapter takes, this chapter is all about modeling of a physical system. Sir, screen पे slides नजर नहीं आ रही. Slide नजर नहीं आ रही. अच्छा. Okay. Let me again do the presentation. Lukman? Lukman? Mohammed Lukman? नजर तो आ रही थी सर जी. लुकमान आपका कुछ इशू है क्योंकि मुझे यहाँ पर वो आ रहा है कि if I start recording then I won't be able then you won't be able to see it. सर नजर आ रही थी. हाँ नहीं लुकमान का कोई इशू है मेरे ख्याल में वो ज्वाइन नहीं कर. मैं दोबारा लुकमान को देखते हैं मेरे ख्याल में वो दोबारा भी सबको नजर आ रहा है जब लुकमान का. अच्छा मैं उसके लिए सिर्फ 1 मिनट इंतजार करता हूँ अगर वो दोबारा ज्वाइन कर ले अदरवाइज फिर देखते हैं उसकी क्या इशू है. I would like to talk to him. क्यों उसे नजर नहीं आ रहा. Okay, I'll go ahead and start. मैं इनके इस तरफ से तो टाइम अगर उनको इशू है तो वो दूसरे सेक्शन के साथ क्लास ले लेंगे. अभी ये टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है. We have to start. ठीक है. So I'll go ahead again, start the recording and do the presentation. Meeting. There are two different ways of modeling a physical system. One of them is state space modeling of a physical system, and the other one is modeling of a physical system in frequency domain. Now, both of them are equivalent models. I mean, you can follow any of the approach, either the frequency domain approach or the state space approach, and you will get a model, a mathematical model of the physical system. And both of those equations may be in different forms, but they represent the same physical system, and they will have the same results if you simulate the two models, either in the frequency domain model or the state space model. If you solve both of them of the models, you'll get the same results. So what I'm trying to say is that you can model a physical system using two approaches. One of them is frequency domain approach, and the other one is time-space approach. Since both of them are equivalent approaches, that means there isn't much difference
practically there is no difference of the model in either of the model that you get from either of the approach. Therefore, in our course, we only study frequency domain modeling. And frequency domain modeling involves Laplace transformation, while the time-space model utilizes differential equation in a matrix form, and there is a special way of writing those equations, but we will not talk about that. So I'll ask someone from the meeting. So can anyone summarize what I said so far? So I can try. Yes, sir. जी, एक स्टूडेंट मुझे जरा समराइज करके बता दें what I've said so far. So there are to model a physical system. One is the time space, and the other one is the frequency domain approach. So the frequency domain approach involves the Laplace transformation, while the other one is the state space or time space. It involves the differential equations. Both are practically the same, but the approaches are different. Okay. Yes. Good. So we'll only focus on the frequency domain. The reason for that is because I think it's more intuitive, and it's the classical approach for modeling of physical system. Now, we discussed in one of the lecture, we discussed what is modeling. हमने ये discuss किया था. Does anyone have? Can anyone share their views about modeling of a physical system? Anyone? No one? अच्छा. Amit, जी कोई है? Somebody want to tell me about what do we mean when we say modeling of physical system? Remember, हमने in chapter 1, those students who were present in class, we discussed a Pro-E model. याद है वो बात? 3D model. Anyone? अगर किसी को याद नहीं है तो फिर कह दे कि सर हमें याद नहीं. जी, CAD model के बारे में हमने डिस्कस किया था कि CAD model is basically mathematical geometric model of a physical object. याद है वो बात? Yes sir, याद है. ठीक है. So in automatic control, the model of a physical system, by modeling of a physical system, we means to get the mathematical equation of a physical system that represents the behavior of the physical system. So, of course, in automatic control, we are dealing with dynamic physical system. Dynamic physical system, कौन से systems को कहते हैं? Any system whose parameters or whose state changes with respect to time. For example, a moving object like a spring mass damper system. In a spring mass damper system, the mass, displacement, or velocity or acceleration, it changes with respect to time. Now, this is a dynamic physical mechanical system. Okay? If the mass is stationary, I mean, if the mass is not moving, if you don't disturb the mass and it is just in a static position balanced by the spring and damper reactions, then in that case, the physical system is a static physical system. Now, in automatic control, we control, in general, in automatic control, we control physical dynamic systems. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आएगी? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now,
Now we will start. Now you can have for control purposes. We can broadly classify physical system into certain categories. For example, there is mechanical motion category, which involves any object. A simple case is like a spring mass damper system, but it could be a projectile, it can be a space shuttle, it can be a rocket, it can be an airplane, it can be a UAV, it can be a drone, it can be a vehicle, it can be anything physical that is in motion. And if we want to control the motion of that object, just like autonomous vehicles, so that means we will have to apply automatic control. And before we can apply automatic control, knowledge to control that the physical motion of that body, we have to get the mathematical equation of that physical system. समझ आ गई इस बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can anyone summarize it for me? Anyone? So that means कि मुझे particularly पूछना पड़ेगा. Okay. Khalil Khan. Yes, sir. अब जरा summarize कर लें what I've said so far. सर मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम स्टार्ट कर रहे थे. अगर हमें किसी व्हीकल या किसी मोशन को अगर हमने कंट्रोल करना है तो हमें उसके मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा और उसके थ्रू फिर हमने उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक, good. यानी before we can apply the knowledge of automatic control to control any physical system, we need to have the mathematical equation of that physical system, physical dynamic system. और वो mathematical equation हमारे पास कैसे आएगी? That describes the dynamics of the physical system. That उस process को जिससे हमारे पास वो equation आती है, that process is called modeling or mathematical modeling of a physical dynamic system, or simply modeling of a system. ठीक है? लुकमान, आप थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट कर लें. मोहम्मद, आपको अब स्लाइड नजर आ रहे थे जब मैं स्लाइड्स दिखा रहा था स्क्रीन पे? ये सर अभी स्लाइड्स नजर आ रही है. पहले कुछ मसला हो रहा था सर, नेट का, भी ठीक हो गया. चलो, गुड. अच्छा, ओके. हमजा, सैयद मीर हमजा, माइक अनम्यूट कर लें. यस सर. अब यही जो हमने डिस्कशन की है फिजिकल सिस्टम्स की, आपके ख्याल में कोई और फिजिकल सिस्टम? मैंने तो मैकेनिकल फिजिकल सिस्टम डिस्कस किया ना, मोशन के. और फिजिकल सिस्टम कौन से हो सकते हैं जिनको हमने कंट्रोल करना होता है रियल लाइफ में? एज एन इंजीनियर आपने कभी सोचा होगा कि ये भी एक फिजिकल सिस्टम है, ये भी कंट्रोल हो सकता है, या आपने कोई प्रोडक्ट देखा हो? सर कोई हीट वगैरह कंट्रोल करें, टेम्परेचर कंट्रोल करें. गुड. जैसे फॉर एग्जांपल रूम एयर कंडीशन, तो हमारे पास एक थर्मल, जैसे हमारे पास रूम जो है इस वक्त, अगर आपके कमरे में गर्मी है, सो इट्स बेसिकली अ थर्मल सिस्टम. और इस थर्मल सिस्टम में जो चीज हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर है, और वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ एन एयर कंडीशन अगर गर्मियां हैं. And if we want to heat it up, we can either use a reversible air condition or heat pump, or a simple heater, electric heater. Good. So let's move forward to our lecture. अब तक समझ आ कि why do we need to get the mathematical model of a physical system? इसका जवाब कौन देगा? सर टू ऑटोमेट द फिजिकल सिस्टम. अजीज, आपके माइक में मेरे ख्याल में इशू है. मिनहाजुल्लाह, माइक अनम्यूट कर लें. जी, आप बता रहे हैं. आपका माइक अनम्यूट हो गया मिनहाज, लेकिन आवाज नहीं आ रही. चलें. लुकमान, आप बता दें.
सर किसी भी सिस्टम कोई भी डायनेमिक सिस्टम हमारे पास हो तो सर हम उसके नेचर को स्टडी करने के लिए हमें उसके डिफरेंशियल So let's get back to the presentation. Now, in order to get a dynamic model of the physical system in frequency domain, we need to use a Laplace transform. Now, most of you have studied Laplace transform in your previous, or at least one of the math course. Is that true? Yes. अच्छा ये कौन से what was the course code or the title of that course जिसमें आपने Laplace transform पढ़ा था? Differential equations. Okay. So what does the Laplace transformation do? So it's a mathematical technique. Typically, when you want to solve a differential equation, what you do, you get a homogeneous solution, and then a particular solution, and then total solution, and at the end of the whole process, you get the solution or an algebraic expression that is considered the solution of the differential equation. True, ये बात याद है आप लोगों को homogeneous solution, particular solution और उसमें initial conditions डाल के आपके पास total conditions, total solution आ जाता है. Remember? Yes. Now you also remember that it's a pretty quite tedious procedure to solve a differential equation. Yes? Yes. Yes, sir. Okay. How much time does it usually take to solve a differential equation of like mx double dot plus cx dot plus kx is equal to f of t? How
call it a frequency domain? ठीक है, बिल्कुल सही है, that's totally correct. But why frequency? Why not something blah blah blah? Why frequency? Okay. The answer to that question is, remember, if you have a time domain equation, it is a function of t, like x of t, displacement x of t, which means that displacement x is a function of time. That means that x is changing with respect to time. Similarly, f of t is again a function of time. But when you convert a differential equation to a time domain differential equation to a Laplace domain frequency equation, everything changes from, for example, x of t changes to x of s, f of s, f of t in time domain changes to Laplace domain of f of s. So the in time domain the operator is t, in Laplace domain the operator is s. Now s is the frequency operator. Okay? Now, so for example, if I have a equation, let's say mx double dot of t, or m second derivative of displacement of t plus cx dot of t plus ax of t is equal to f of t. ठीक है, ये इक्वेशन याद है? Now, if I can convert it to a Laplace domain, जल्दी से मैं आपके सामने करता हूँ. It would be something like this. बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे. But it would be something like this. F m s square. So m s square x of s plus c s x of s plus a x of s is equal to f of s. So can you figure out the difference between two equations, except for, apart from the s square s, and apart from that, can you see that in the time domain equation, which is this equation, everything is a function of time. So x double dot is a function of time, or x double dot of t, or acceleration is a function of time. Similarly, x dot, which is velocity, is also a function of time. And x is a function of time. ठीक है? अच्छा, जब मैं ये आपको स्मॉल डॉट नजर आ रहा है इस वक्त x of t के करीब, स्मॉल डॉट, इसको मैं मूव कर रहा हूँ. मूव स्टूडेंट ने पहले कहा था कि सर जब आप, ठीक है, जब मैं कर्सर मूव करता हूँ तो दिस रिप्रेजेंट माय कर्सर. ठीक है? Now, if we see Laplace domain, everything is a function of s. So here x double dot is a function of t. Here sx, which represent x double dot, s square x, which represent x double dot, is a function of s. Similarly, x dot is here, velocity is a function of time. Here, that term, velocity term, comes out to be this thing, where now is simply x is a function of s. Now s is called frequency operator or Laplace operator, and s is equal to sigma plus j omega, and omega is the frequency. So do you now know why do we call it frequency domain?
टाइम डोमेन इक्वेशन कहते हैं, उस दूसरी इक्वेशन को हम क्यों फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन कहते हैं? एनीवन अदर देन लुकमान? So because the variable in the second equation depends on the frequency omega. Yes. So in the first equation, everything is a function of time. Therefore, we call it a time domain equation. That means that everything is in the time domain. The second equation, everything is a function of S, which is a Laplace operator or frequency operator. Why do we call it as a frequency? Why do we call it a frequency operator? Because if you dissect further, S, the frequency operator S, it is actually equal to sigma plus j omega. Omega is again in radian per second, it's the actual frequency. So that's why we call S as a frequency operator or Laplace. It's a Laplace operator, but since it has frequency inside it, therefore we call it a frequency operator, and this whole equation is called a frequency domain equation. Okay? Frequency domain equation. Now, apart from converting it from time domain to a frequency domain, it does something else other than Lukman. What happens when we convert a differential equation, time domain differential equation, to a frequency domain equation? सर हम मॉडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर फ्रीक्वेंसी वो तो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ा? What happened? Look at the structure of the two equations. डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कॉमन नहीं ले सकते सर, अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, we can do that. सर डिफरेंशियल take equation but हाँ, ये differential equation जो है हमारे पास वो convert हो गई है. The first is the differential equation. Time domain is the differential equation. It has been converted into a algebraic equation. ठीक है? Now, what is the advantage of algebraic equation? First of all, it is easier to solve. It's easier to solve an algebraic equation than to solve a differential equation. True? Agreed? yes sir Okay. क्यों? Why am I saying that it's easier to solve a algebraic equation? The reason for that is, okay, so if I have a so let's say I get out of here. Let's say I basically let me insert a blank page. So, layout, blank. So let me write some things for you here. Okay. Now, if I have a differential equation, it would be something like this: m second derivative of x of t plus c first derivative of x of t plus k x of t is equal to f of t. Okay? Now, when we say that we need to solve this equation, that means that we need to get the value of x of t out of this equation. That what is the value of x of t for all values of time. So we need the solution of this differential equation would be something like this. The solution would be something like this, where x of t will be given as an algebraic equation, like maybe 45 cos 3t plus
plus 2 radian. Something like this. That might be the solution of, so x of t is equal to 45 cos 3t plus 2 radian might be the solution of this equation of m second derivative of x of t plus c first derivative of x of t plus a x of t is equal to f of t. Now to get this solution, we have to follow this long procedure of finding a homogeneous solution, then finding a particular solution, then placing the initial conditions and getting a total solution, and in the end we will get this x of t is equal to 45 cos 3t plus 2 radian. But if you look at the equation, it seems like that x of t is right there, and if I don't know my math, I might be inclined to get x of t as common from this equation, something like this, which is of course wrong. That is not correct. You cannot do that to a differential equation. We have discussed that in one of the previous lectures, but I'm repeating that. So plus a is equal to f of t, or the solution x of t is equal to f of t divided by m second derivative plus c first derivative plus a. Okay? I might be, if I don't know my maths, if I don't know my differential equation very well, I might be inclined to find x of t is equal to f of t divided by m second derivative of I don't know what plus c first derivative of I don't know what plus a. Now, of course, this is not correct. This is wrong. We cannot do that. We cannot do that to a differential equation. So, again, we are stuck with that tedious process of finding a homogeneous solution and a particular solution and total solution, and also apply the initial conditions to get to this solution x of t is equal to 45 cos 3t plus 2 radian. ठीक है? ये जो मैंने solution लिखा है, this is just I wrote some random values, but your solution will be an algebraic equation. A solution to a differential equation is an algebraic equation of containing x as a function. So if you're solving for x of t, then your solution will be an algebraic equation of x as a function of time. Now, what does Laplace transform does? What Laplace transform does, that when we convert this, when we take a Laplace transform of this equation, which is m second derivative of x of t plus c first derivative of x of t plus a x of t is equal to, so I take a Laplace transform of left side of the equation, and also take a Laplace transform of right side of the equation. Okay? If I take Laplace transform of the whole equation, this equation number 1, let's call it equation number 1, then my Laplace transform equation will be, assuming initial conditions are 0. So remember, in solution, in the classical solution method of homogeneous solution and particular solution, total solution, we apply initial conditions later on. But when you convert a differential equation into a frequency domain equation by taking the Laplace transform of the differential equation, then you have to apply the initial conditions at the time of transformation of differential equation into Laplace domain. So, for this example, I'll consider all the initial conditions equal to 0 to make my Laplace transformation simple, so we can focus on the whole process rather than get stuck in the details of Laplace transformation. So if you remember your Laplace
transformation of the previous course, m, that when you take a Laplace transformation of a constant, it remains constant. But the derivative of a differential equation is represented by s, and if it's the second derivative, then it will be s squared. Okay? And x of t simply converts into x of s plus c, again constant. Laplace transformation doesn't do anything to a constant, so c remains c. But the derivative, which is the first derivative this time, in the previous case, it was the second derivative. Now it's the first derivative, c d or dt. So since it's a first derivative, it will get replaced by s, and the power of s will now be 1 because it's a first derivative. In the previous case, we had ms squared. Why s squared? Why the power of s is 2? Because of this thing, that the derivative is the second derivative. So d or dt gets replaced by s, and the power of d or dt squared is noted here. So again, x of t will convert into x of s, and then a will have a x of s, and it is equal to, and f of s will simply convert into, f of t will simply convert into f of s. Okay. Any questions so far? यहाँ तक? Anyone? Hello? No, sir. किसी को issue है? Is there any issue to someone who doesn't understand what I've done so far? सर ये IC equals to 0 ये जरा समझाते हैं ये लाइन. This means, yes, that's fine. It's initial condition of the differential equation. Okay? Okay, sir. Okay? So IC means initial conditions. Okay? Anyone else? Any other issues? Okay, so I'll move forward. Now I have an algebraic equation. Let's call this 2. Now this is an algebraic equation. Now, since it's an algebraic equation, so all the rules of algebraic equation applies to equation number 2, which means if from any algebraic equation you can take any variable as common. Since it's algebraic equation, so I can take x of s as common from the left side, so I'm left with ms squared plus cs plus a is equal to f of s. Okay? Or I can write it as x of s is equal to f of s divided by ms squared plus cs plus a. Okay? Now this, we can do this in Laplace domain. We cannot do this in time domain, because in time domain you cannot take a variable outside of derivative. But since in the algebraic equation we do not have any derivative, it's just simply m multiply s squared, which is an algebraic variable, multiply x of s, which is again another variable. So we can simply take x of s outside of this whole left hand side, take it out. Okay? Now if you can see, this solution of f of x of s is nothing like the actual solution of a differential equation. Can anyone tell me why it's not like that? Sir, above equation is a function of time and the down one is function of frequency. Yes, true, very good.
So it is solution. It is solution of the differential equation. It is solution of this differential equation, but it is a solution of this differential equation in frequency domain. It's not a solution in time domain. It is now this is a solution. Now this is a solution of this Laplace transformation equation, but of course it is still in Laplace domain. Now to get this solution, the time domain solution, from the bottom solution, x of s, get x of t solution from x of s, you will have to take inverse Laplace of this solution. So inverse Laplace and inverse Laplace. समझानी? Anyone? When we take inverse Laplace, and of course we will see that how to take inverse Laplace of this system later on, later slides में हम discuss करेंगे. When we take the inverse Laplace transform of this solution, we will get x of t is equal to 45 cos 3t plus 2 radians. Assuming that this is the solution of the differential equation, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, I don't know what is the actual solution, but just we assume that this is the solution of the differential equation. Now, do you see the whole process? Let me get up, like it deep, and I'll go back to meet, and now is the question and answer session. Mohammed Tanveer, mic unmute कर लें. तनवीर आपको समझ आ गई है कि how do we do Laplace transformation and how do we find solution of the differential equation using Laplace transformation? Can you give me a summary of the process? जी नहीं, ये बताएं कि ये पूरा प्रोसेस, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है, और rather than using classical method of finding continuous solution and particular solution or total solution, आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि नहीं, मैंने इसको Laplace transformation के थ्रू इस differential equation का solution find out करना है. Now, how would you do that process? उस process की हमें एक short summary दो. सर पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं लेप्लास इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन से. Good. Then अच्छा, the proper way to say that is if we convert a time domain differential equation into a Laplace domain or a frequency domain algebraic equation by taking Laplace transformation of the differential equation. Okay, good. Next. सर फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब x ऑफ s को एक साइड पे रख के उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, उसमें कॉमन लेना और वो हम इजीली स्टेप्स कर सकते हैं सर. Good, good. तो अच्छा, एक दरमियान में एक छोटी सी चीज, the moment you transform from time domain to Laplace domain, the moment you take Laplace transform of a differential equation, you also have to apply the initial condition at that step. ठीक है? तो ये बात हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So once you have the solution in Laplace domain, ठीक है? What else? What will be next once you have the solution x of s? ये सर फिर हम उसका दोबारा इनवर्स लेके उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो फिर हमारे पास वो जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वही सोल्यूशन हमारे पास. ठीक है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट चैट यूज करें. एक्चुअली मेरे पास क्योंकि एक ही स्क्रीन है, मैं चैट को फॉलो नहीं कर पा रहा.
ठीक है, तो काइंडली अगर आपका क्वेश्चन है तो बेशक आप दरमियान में अनम्यूट कर सकते हैं, जब स्पेशली जब मैं कहूँ कि anyone has a question or anyone wants to add to it. So yes, once we have x of s, then we can convert it back. We can get the solution in time domain, which is x of t, by taking first the class of x of s to get the solution x of t. ठीक है, any question किसी स्टूडेंट्स का इसके अलावा क्वेश्चन है? No one? Let's move forward. So let's go back to. अच्छा, आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन नजर आ रही? Yes, sir. Okay. Now so far, now look at this. Okay. So looking at this slide, now let's discuss the 3 bullet points. Number 1, it converts a differential equation to an algebraic equation. We have already discussed that. I think everyone knows that now. It allows input, output, and system as distinct and separate parts. ठीक है? How do you... Excuse me, sir. ये slide half नजर आ रहा है सर. कैसे half नजर आ रहा है? अच्छा, let me make it full screen. सर एक portion नजर आ रहा है, बाकी नजर नहीं आ रहा. अभी सही हो गया. नजर आ रहा है? सही है. ठीक है? Okay. If anyone else has an issue, you can बता सकते हैं with the slides or the screen. So, if we look at this slide, what does the Gauss transformation does? It converts a differential equation to an algebraic equation. We all know that. We have discussed it. I think everyone understands that now. The second part, it allows input, output, and system as distinct and separate parts. ठीक है? इसका क्या मतलब है? Can anyone explain that? We बता सकते हैं? What do that mean? Yes, sir. जी. सर इसका मतलब ये है कि सर इसमें जो हमारे पास इनपुट होता है ना सर, मतलब फोर्स, सर वो हमारे पास एक साइड पे आ जाता है, और सर जो सिस्टम के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे सिस्टम के पास मतलब जैसे मास, डैम्पर और स्प्रिंग, वो हमारे पास अलग हो जाते हैं, और सर जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का आउटपुट, यानी एक्स ऑफ एस जो डिस्प्लेसमेंट होता है सर, वो हमारे पास सेपरेट हो जाता है. गुड गुड, that's what it means. Let me explain it. So we had this solution, पिछले slides पे हमने ये वाली solution मालूम की थी. That was x of s is equal to f of s is equal to divided by ms square plus cs plus k. ठीक है? Or I can write it as x of s is equal to 1 over ms square plus cs plus k into f of s. ठीक है? Now, what is x of s? पिछली स्लाइड पे देख लें, हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन थी, m सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x of t plus c फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x of t plus k x of t is equal to f of t. इस इक्वेशन में, या चले मैं दोबारा ये साफ साफ के लिए लिख देता हूँ, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, m सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x of t plus c first derivative of x of t plus k in x of t is equal to t. चलें, to make more precise, more elaborated.
mass damper system, we have a system, and the system composed of mass, spring K, mass M, spring K, and damper C. While now this is our system: spring A, mass M, and damper C. Spring mass damper system. Now, an external input is applied to this system, which is f of t. F of t is an input to this system. So when f of t is applied to the system, then the system has a response, or output of the system is displacement. When the input force is applied to mass, it results in the output displacement of the mass. यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है? So in this differential equation we have the input force. This is our input, but the output, which is x of t, x of t, x of t, and x of t, and mass, spring damper constant c, and spring constant k, they are intertwined. वो आपस में जुड़े हुए हैं. You cannot separate them. You cannot take x of t common from the left side of the equation to separate the output x of t of the system, output of x of t of the system, from the system itself, which is mck, system parameters. उससे आप separate नहीं कर सकते. And system dynamics, which are the derivatives. ठीक है, आप उससे separate नहीं कर सकते. You cannot do separation in time domain. But once we convert this frequency, the time domain equation into frequency domain equation, once this equation m second derivative of x of t plus c first derivative of x of t plus k x of t is equal to f of t is converted into a frequency domain, into an algebraic equation, we can separate the input, which is f of s, which was already separated in time domain. F of s is the input equivalent of f of t, where x of s is equivalent of x of t in frequency domain, and this ms square plus cs plus k represents the system and its dynamics, because these s square represents derivatives. Okay? So now we have converted this, we have separated this system. Yeah, in mathematical form, we have separated this system into three parts. One is input, which is in time domain, and s domain. So in time domain, yes, f of t is separated from the rest of the system. And of course, in S domain, we have f of s separate from the, it means it is not intertwined with the other parameter or other things in this equation. But the output is intertwined with the system. X of t is intertwined with the system dynamics, system and its dynamics. So we cannot separate x of t in time domain from the system dynamics. But in the class domain, we have been able to separate it from the system and its dynamics. And last one is the system, which includes system parameters m, c, k, and its dynamics, which means the second derivative, first derivative. So we cannot separate it in time domain, but in frequency domain, it is equal to 1 over ms square plus cs plus k. ठीक है? Now this thing in frequency domain, this thing or this thing is given a special name
Now transfer function exists in frequency domain. It doesn't exist in time domain because transfer function represents the physical system parameters such as in our case mass m, stiffness a, and damping constant c, but it also represents the system dynamic behavior, which in this case are accounted by s square and s. Okay? So it represents not only the dynamic system composition, but it also represents the system dynamic behavior, how it will behave if a certain input is applied to this system. So everything is enclosed in this transfer function. Now we cannot get transfer function in time domain. कौन बताएगा? Why can we not? Let me answer. So, Kasif Khan, kindly अपना mic unmute कर लें. Kasif, कैसर को जरा मैसेज कर दीजिएगा बाद में कि सर तुम्हारा पूछ रहे थे और तुम सोए हुए थे ज्वाइन करके ठीक है सोने चले गए थे तैमूर मोहम्मद जी काली अपना माइक म्यूट कर लें यस सर जी तैमूर तो मुझे ये बताएं my question is why can we not have a transfer function in time domain because in the beginning we transfer it into frequency domain. So it is now in frequency domain. It is in some different coordinate system. So it is not our required answer. So we will have to convert it back into time domain using Laplace inverse. वो तो ठीक है my question is अच्छा can you tell me what is a transfer function सर आपका आवाज कट रहा है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही. okay I'll repeat what is a transfer function ट्रांसफर फंक्शन लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास सिस्टम का जो सॉल्यूशन आ जाता है वो ट्रांसफर फंक्शन है. नहीं अच्छा मोहम्मद सुहेल आप बता दें मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सुहेल नहीं है नाजिर अहमद आप बता दें नाजिर अहमद माइक अनम्यूट कर लें जी फैज बताएं आप फैज को बोलने दें फैज कहीं जी सर ये हमारे पास एम सी और के हमारे पास ये वो इनपुट्स हैं और आउटपुट का रिलेशन है सर ये जो हमने अप्लाई किया है लेप्लास ट्रांसफर तो जो उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गए ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं सर ट्रांसफॉर्म हो गए नहीं लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात बताएं कि स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम में इनपुट क्या है इनपुट सर हमारे पास फोर्स है which is a function of time or f of t good ठीक है and output या response जब आप इस सिस्टम को फोर्स देते हैं तो इसका displacement force on a spring mass damper system has a displacement in x of t ठीक है अच्छा इसके अलावा इस सिस्टम में एक तो इनपुट होगा एक आउटपुट होगा ठीक बता दिया इसके अलावा हमारे पास दो और चीजें एक जो है सिस्टम पैरामीटर्स है ठीक है ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स है अब इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में कौन कौन से हैं मास स्प्रिंग कांस्टेंट और टेंपरेचर बिल्कुल ठीक है और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सिस्टम की वो क्या है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीजें कौन सी चीज मैथमेटिकल इक्वेशन में कौन सी चीज इस डायनामिक कैरेक्टर को इनटू अकाउंट लेती है वो क्या चीज होगी जो कि इसके डायनामिक कैरेक्टर को इनटू अकाउंट लेती है यानी इसकी मोशन कैसे होगी
इसकी मोशन स्लो होगी, इसकी मोशन तेज होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। उन चीजों को इक्वेशन में क्या चीज उन कैरेक्टरिस्टिक को कॉरस्पॉन्ड करने मास स्प्रिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग कांस्टेंट वो है। लेकिन सिर्फ ये नहीं ना, इसके अलावा हमारे पास जो डिराइवेटिव्स हैं वो इस सिस्टम्स की डायनामिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, ठीक है। अब अगर आप देखें जो हमारे पास डिराइवेटिव्स हैं जो कि इस सिस्टम की डायनामिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, और मास जो है और डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ टी जो है, यानी मास और स्प्रिंग स्टिफनेस और टेम्पर कांस्टेंट, ये तीनों पैरामीटर्स डिस्प्ले आउटपुट ऑफ द सिस्टम और सिस्टम डायनामिक्स, ये तीनों चीजें आपस में इनसेपरेबल है टाइम डोमेन इक्वेशन। यू एग्री? यस सर एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी, अगर मैं आपसे कहूं कि इससे एक्स ऑफ टी सेपरेट कर लें, तो जो कि रिस्पांस है, आउटपुट है, अब आप रिस्पांस को सेपरेट कर सकते हैं एम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी से टाइम डोमेन में? नो सर नहीं कर सकते। गुड। सो अगर हम लेप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर लें इस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एफ ऑफ टी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ एस में, जो कि इनपुट ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। वो तो सेपरेट हो गए। फिर जो एक्स ऑफ टी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ऑफ एस में, और हम कॉमन ले लेंगे एक्स ऑफ एस को सेपरेट कर लेंगे बाकी चीजों से, ठीक है। अब एक्स ऑफ एस क्या चीज है, सिस्टम की क्या चीज, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट आउटपुट, या सिस्टम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को सर, आउटपुट। तो अब आउटपुट भी सेपरेट हो गया और इनपुट भी सेपरेट हो गया, बाकी जो चीजें रह गई हैं वो क्या चीज, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो बाकी रह गई, 1 ओवर एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस ए जो रह गया, ये मूवमेंट को बताएंगे उसकी ये है ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम डायनामिक्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके सर ठीक है। तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिस्टम और सिस्टम का रिस्पांस आपस में कपल्ड होते हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम का आउटपुट है वो सेपरेट हो जाता है और सिस्टम जो है सेपरेट हो जाता है, ओके सर ठीक है। और सिस्टम का हमारे पास एक टर्म आ जाती है सिस्टम की, उसको हम अभी आपको स्लाइड में बता रहे हैं ना, जी सर उस टर्म को जो कि मैंने लिखा हुआ है 1 ओवर एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस ए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए होता क्या है कि हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और सिस्टम जो है उस इनपुट को कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में, ट्रू, यस सर ठीक है। यानी एक सिस्टम है उसको हम इनपुट फोर्स देते हैं एफ ऑफ टी, वो सिस्टम जो है उस एफ ऑफ टी को किसी एक्स ऑफ टी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। सो द रीजन व्हाई वी कॉल दिस 1 ओवर एम एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम एस स्क्वायर प्लस, द रीजन व्हाई, यहाँ पर देखिए नजर आ रही है स्लाइड पे जो मैंने इंसर्ट करके किया, जी 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 सर ठीक है। द रीजन व्हाई वी कॉल 1 over m of 1 over ms square plus cs plus a transfer function, because when you multiply input with the transfer function it gives you output of the system. So basically what input does, I can make it like this. So this is 1 over ms square plus cs plus as, अब जो मैंने ब्लॉक डायग्राम ड्रा किया है ना, देखिए उसमें से फर्स्ट एरो, इनकमिंग एरो जो है वो है सिस्टम इनपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, फिर जो है सिस्टम है, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन, व्हिच इज 1 over f 1 over ms square
input passes through the transfer function, it converts into output of the system. That's why we call it transfer function. It transfers input to the output, or transform input of the system to the output of the system. आउटपुट आउटपुट ठीक है? Clear? जी सर So यस I'll सर come थैंक back. यू You're welcome. अच्छा, Abdul Aziz, kindly mic unmute कर लें. आप मुझे थोड़ा सा short उसमें बताएं कि ट्रांसफर फंक्शन है क्या? सर ये इनपुट को आउटपुट ऑफ द सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं Good. और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मतलब ये होता क्या चीज है? फिजिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि है क्या, ठीक है, इसका काम क्या है? It converts input of the system of a dynamic system into output of a dynamic system. लेकिन ये होता क्या चीज है? ये किस चीज से बना हुआ है? सिस्टम पैरामीटर और dynamics. यानी total system. It represents the system behavior, which include system configuration or system parameters configuration, which is MCK, and also how it also encompasses the dynamic behaviors of the system. Again, so transfer function represents the system. Or when we say it represents the system, it is representing both the system configuration and the system dynamic behavior. It represents both of those. Okay? Okay. Thank you. Mute करने के लिए. अच्छा. So let's move forward. यहाँ तक समझ आ गई? Any question? Anyone? Anyone want to ask a question? Okay. So let's go back to the slide and we will discuss these 3 points quickly. So it converts a differential equation to an algebraic equation. We have already covered that. It allows input, output, and system as distinct and separate parts. Yeah, just recently, it enables to represent conveniently the interconnection of several subsystems. देखिए अभी आपके सामने मैंने ये वाला प्लॉट बनाया. ठीक है? Any student? ठीक है? So I made this plot. अब अगर मेरे पास 2 सिस्टम हो, यानी एक सिस्टम को आप इनपुट देते हैं, वो उसका आउटपुट जो है, यानी एक सिस्टम है, दिस इज सिस्टम 1, ये उसको आप इनपुट देते हैं R of t, उसका आउटपुट जो है दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट है, और दूसरे सिस्टम का जो आउटपुट है वो तीसरे सिस्टम के लिए इनपुट है, और फिर तीसरे सिस्टम का आउटपुट आ रहा है. तो इसका मतलब ये है, what it does, it helps us is the class transformation की वजह से we can separate the system input from its output and from the system itself. Once we are able to do that, we can represent our physical system in the form of a block diagram. Once we can have a block diagram of a physical system, then we can connect multiple physical systems with each other, and we can show that interconnection of multiple physical systems in the form of block diagrams. Now we can do that easily because of Laplace transformation, enabling us to separate the input and output of the system from the system itself. Okay? So these are the 3 points for Laplace transformation. Why do we do Laplace transformation? What are the benefits of Laplace transformation? Describe everything. Next, Laplace transform. Now you know the whole process of how to solve a differential equation using Laplace transformation. Right now, we are going to include the material of your previous class. How would you like to get the Laplace transform? Okay?
सर -0 आई डोंट नो सर इसका क्या मतलब है. ओके ठीक है. डज एनीवन नोज इट? सर इसे इंटीग्रल मतलब सॉल्व करना आसान हो जाता है ना. एक तरफ हम उसको लिमिट पुट करेंगे 0 तो सारा टर्म 0 हो जाएगा. नहीं not that. Sorry. Do you have anyone else? Eric, put the letter. अच्छा, okay. Let's talk about something. Minus infinity? नहीं, ये वाली जो ये 0 minus हजार है. So ये कुछ initial conditions नहीं, ये initial condition is related to that. लेकिन वो तो 0 से भी हो सकता है. Why is 0 minus? Sir, exclusive of initial condition है. नहीं. So let me explain that. It's very interesting. For जबरदस्त ये चीज बेसिकली पड़ी हुई है. लेकिन सर मैं बताऊँ जी बिल्कुल सर ये तो नहीं है कि सर अगर 0 का इंटीग्रेशन नहीं होती तो सर हम पिछला कोई टर्म सर यूज कर सकते हैं. You're a little bit close, लेकिन not exactly what you said. So let me explain the function. ठीक है? चलें. कोई और try देना चाहते हैं? Okay, I'll go ahead. So let's say we have a function of time. Okay? This is our time. And let's suppose our function was ओके सर. ठीक है. There are some ambiguities. We will discuss that. Now, if I'm going to ask you a few questions. ठीक है? कोई भी volunteer उसका जवाब दे सकते हैं. What's the value of function at t is equal to -5 seconds? क्या value है इस function का?
Zero. Zero. Good. Zero. Say. And what is the value of t equal to 5 seconds? One. Okay. Now, here's the tricky part. What is the value of t of u of t at equal to 0? 0 and 1. 1, sir. 0 to 1. Acha. Now it can be 0, it can be both 0 and 1. 5. Okay? It can be 0, it can be 1, it can be 0.5. Depends on what definition you follow. आप कौन सी definition follow करते हैं? आपकी book में जो step function की definition है वो ये है. U of t
7 न्यूटन तो हम इससे ये स्टेप फंक्शन तो है, इसकी शेप तो स्टेप की तरह है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड चेंज आ रहा है स्टेप के दौरान वो यूनिट 1 यूनिट चेंज नहीं आ रहा बल्कि वो 7 यूनिट। तो हम इसे यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि दिस इज अ स्टेप फंक्शन ऑफ 7 यूनिट। अब क्लियर? ओके, Laplace transformation similarly, how do we find Laplace transformation? Any function, any Laplace transformation tables आप सबको याद है और यूज करना का तरीका याद है? Yes sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि we will solve some basic example with the original definition of Laplace transform and also with the help of a table. ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे ताकि you have total command of Laplace transformation, आपको Laplace transformation की समझ आ जाए। आपको अभी तक इस बात पे पता चल गया कि why do we take Laplace transformation, what is the advantage of taking Laplace transformation in automatic control। ठीक है, इन दो बातों की क्यों करते हैं, because it converts a differential equation into algebraic equation। advantage automatic control में specific advantage Laplace transformation का क्या है, it helps us separate input output and system from each other and it also helps us to graphically show differential equation in the form of block diagrams। ठीक है, ये advantage है। अब आपने यहाँ तक समझ लिया, next step क्या है कि you have to be proficient in Laplace transformation। आपको mathematical concepts आपके clear करने हैं कि Laplace transformation कैसे है, उसकी mathematical structure कैसे है, and how do you take that, how do you take a Laplace transformation of any time domain function। So there are two methods, one is the original integral method जो कि यहाँ पे मैंने circle किया हुआ है, आपको नजर आ रहा है, और दूसरा method जो है हम ये table यूज करेंगे। शुरू में अभी I will do some examples, उस examples में मैं क्या करूँगा कि मैं एक function लूँगा और मैं integral की मदद से उसका मैं Laplace transform मालूम करूँगा, f of s मालूम करूँगा, एक दफा मेरे पास f of s आ जाएगा, वो हम compare करेंगे अपनी टेबल के f of s के साथ। अगर दोनों सही आ जाए तो हमें श्योर हो जाएंगे कि टेबल का जवाब और हमारे ओरिजिनल Laplace इंटीग्रल का जवाब सेम आ
ज़्यादा tedious है, and we will try to avoid it as much as we can. लेकिन during our course or in your professional life, you may come across a situation जिसमें इस टेबल में वो एंट्री नहीं होगी, उस फंक्शन की एंट्री नहीं होगी जिस फंक्शन को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना चाहते हैं। तो फिर अगर टेबल आपके काम पे नहीं रहेगा, फिर आप कहाँ पे जाएंगे? आप वापस इनिशियो पे जाएंगे, ओरिजिनल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रल को यूज करके उस फंक्शन का आप जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। So let's start with that. Let's start with example 1. Okay? So example 1, we have a simple unit step function u of t. Okay? Simple step function u of t. हमसे कहा गया है this function s f of s किस चीज के बराबर होगा? जो इंटीग्रल डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, कि सबसे पहले हम f of t लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे e raised to the power minus s of t। स्टेप फंक्शन अगर हम देखें, ठीक है, so what is the value of step function? ठीक है, step function को हम आपके लिए unit step function, it has zero value, and then up to infinity, this is magnitude, this is a u of t function, and it has a magnitude of 1 because it's u of t। ठीक है, कोई और फंक्शन हो जिसका, देखिए u of t, ये जो u है ना, ये यूनिट स्टेप के लिए स्पेसिफिकली मखसूस किया गया है। अगर आपको कोई लिख दे u of t, तो इसका मतलब है कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर कोई u लिख दे कि f of t is equal to 5 u of t, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन की शेप तो स्टेप फंक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट है। ठीक है, सो u of t always represent, ये अपने पास आप नोट कर लें, ठीक है, और अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि u of t represents always a step function of magnitude 1 unit। ठीक है, so now this is u of t, and this function is 5 is just ठीक है। अच्छा, now if we integrate this, थोड़ा सा मैं this अभी मैंने आपके सामने लिखा है कि u of t is defined as one magnitude for any value of t greater than 0, or चलिए हम it is 0 for any value of t less than 0, and it is 1 for any value of t greater than 0। ये हमारे पास फंक्शन। अब अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, so लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of f of t, अगर मैं इस फंक्शन का लाप्लास ले लूं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इंटीग्रल लेना है 0 माइनस से लेके इंफिनिटी तक, और इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं इस फंक्शन को लूंगा f of t और इसको मल्टीप्लाई करूंगा e raised to the power minus s of t के साथ, पहले मल्टीप्लाई करके और
फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 माइनस टू इंफिनिटी. नाउ I can write this integral as 0 minus 2 to 0, ठीक है, 0 minus to 0 f of t e raised to the power minus s of t dt plus 0 to infinity, ठीक है. Now ठीक है. Now we know that the value of from 0 minus to infinity is for all practical purposes equal to 0. So 0 plus. To the power minus s of t divided by minus s from 0 positive to infinity. Now, take it. I'm sorry, we made a mistake here. Not in this example. We have to use the lower limit. Impulse function. So, because we have the lower limit, otherwise I'm about 0 to scale. So it will be Hello.